हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह आज सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी मैथ के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स की आर एस अग्रवाल बुक, एनसीईआरटी बुक, सभी क्लासेस का सॉल्यूशन मेरे द्वारा 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी सहायता कीजिए। आज ये इस वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 24 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व कराने का आप प्रयास करेंगे। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मेरी सलाह आपको रहेगी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रिवीजन करना है तो ये आपका रिवीजन वीडियो हो सकता है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ विद इन द वे जैसे कि आपको अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन लगाना है बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को तो वो भी उनके लिए भी ये वीडियो हो सकता है, और जो मेरे प्यारे नए छात्र 9th से 10th क्लास में अब आने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 से। आर एस अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस चैप्टर एक्सरसाइज में हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है 16x² इज इक्वल टू 24x+1। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 16x² नेगेटिव 24x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। Now this is the quadratic equation we have, because this equation is variable in x and the maximum power of x is here 2, so therefore it is known as the quadratic equation in x. Now compare the equation with general quadratic form or standard quadratic form, that is ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 16 है, तो ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 16 आएगा। वैसे ही यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव 24 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू नेगेटिव 24। यहाँ पर c का कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है -1 है और यहाँ पर c का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटे, पॉजिटिव c है, तो c इज इक्वल टू -1। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर क्वाड्रेटिक और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू b² नेगेटिव 4ac। अब इसका कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, मैं दोबारा से समझा देता हूँ बेटे। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर d की वैल्यूज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स d इज पॉजिटिव, देन रूट्स आर पॉसिबल एंड द रूट्स हेयर इज अल्फा, अल्फा विल बी हेयर नेगेटिव b पॉजिटिव अंडर रूट d बाई 2a, and the beta, the second root is here negative b negative under root d upon 2a. This is the first case. In second case, if d is equal to 0 or d is positive, then we can also say that roots are possible, but in this case both roots are same, so alpha beta is same, that is negative b upon 2a will be the formula, and we are going to apply this formula. Now the third case is that, case number third is that if d is less than 0, that is negative, so in that case no real roots are possible, no real roots are possible in this case, so we are not going to solve this type of quadratic equation further here in class 10th. This is the topic
of further classes. If we have a imaginary roots, then how to find the imaginary roots? This is a concept of further classes. We are going to discuss this concept in further classes. Okay, now comes to this question. Now we have A, B and C. Now put the value of B, A, C here and find the value of D. So negative 24 whole square, negative 4, value of A is 16 into negative 1. So we have square of 24 is the square of negative number is always positive. The square of negative number is always positive. So here negative 24 square. So it will going be positive 556. Negative going to multiply negative, then it become positive. Positive 64. After multiplying we have 640. Now we can say D is positive or D is greater than 0 here. Then we can say that roots are possible. Roots are possible of this quadratic equation. Then we find the value of D. We find the value of under root D here. So the value of under root D is 640. So it will be 8 root 10. So we have the value of root D. The value of root D is here 8 root 10. Now we are going to apply our quadratic formula. By quadratic formula we are going to find roots. So this is the case here. In this case here there are two roots. One is alpha. So alpha is negative B positive under root D by 2a. So put the value of B. The value of B is negative 24 positive, and the value of root D is 8 root 10. 2a is 16, 16 2 is 32. So that is 32. Now 8 is common. We have 3 plus root 10 upon 32. This cut 4 times. So alpha will be 3 plus root 10 in upon 4. This is the value of alpha we have. Now we have to find the value of beta. For that I am going to rub this. This is a concept I have to tell you. You just copy this. Now we have to find the value of beta. So the formula of beta is negative B negative under root D upon 2a. Now put the value of B. Negative 24 negative 8 root 10 upon 2 into 16, that is positive 24 negative 8 root 10 upon 32. Now 8 is common in both the term in numerator. So we have 3 negative root 10 upon 32. 8 1 ja 8, 8 4 ja 32. So the value of beta we have negative root 10 upon 4. This is the value of beta we have. Just copy this question in your notebook and you can take the screenshot. Now move to the question number 7. I am going to rub this question here. Question number 7 is 15x square negative 28 is equal to x. Now first we are going to convert it into quadratic form, that is 15x square. This x when goes to left hand side it become negative x. So negative x negative 28 is equal to 0. Now this is the required quadratic equation. What we are going to do now? Now we are going to compare this equation with the standard form and find the values of A, B and C. So here my dear bacha, you just comment the values of A, B, C in the comment box. The value of A is here 15. The value of B here is negative 1 and the value of C
here is negative 28. Now fill these value in the discriminant formula and find the value of discriminant. Now do this. D is equal to negative 1 square negative 4 15 into negative 28. So we have D is equal to 1 plus 15 चौका 60 into 28. We have D is equal to 1681. Now we can say D is positive here, so roots are possible. Find the value of under root D. So for that I put the value of D here, 1681. This is the whole square of 41. This is 41. Now we are going to find the value of alpha and beta. For that we are going to rough this area and find the value of alpha. Now put the value of B, negative 1 positive 41 upon 2 into 15, that is negative 1 is positive 1 plus 41 is 42 upon 30, that is alpha is equal to 7 upon 5. 6 5s are 30. Now find the value of beta. Now we can very easily find the value of beta. So put the value of B, negative 1 negative 41 upon 15 to the 30. So positive 1 negative 41 upon 30. So we have negative 40 upon 30. So beta will be here beta negative 4 by 3, and this is the answer. So the roots of this quadratic equation is 7 upon 5 and negative 4 upon 3. Now move to the next problem, problem number 8. This is the logic. I am going to solve each and every question in the same pattern, so therefore I am not going to rough something here. The required area we are going to be rough. Now come to the question number 9. The question number 9 is here. Under root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Let me check. Yeah, this is the right quadratic equation is given. So this is the quadratic equation given here. Now we are going to compare this quadratic equation with the standard form and find out the values of coefficient like a, b and c. So after comparing, what is the value we have? The value of a is root 2, the value of b is 7 and the value of c is 5 root 2. Got it? Now we are going to find the value of d here. Let me rub this. Yeah. So the value of d we can calculate. The value of b is 7, square of 7 negative 4, value of a is root 2 and value of c is 5 root 2. Now square of 7 is 49. Root 2 and root 2, when same root values going to multiply, then we have the number which is inside the root. So root 2 going to multiply root 2, so we have only 2. So 4 into 2 into 5, and this calculation will be 40. So D is here 9, that is positive. So we can say that roots are possible here beta. Now find the value of under root D, that is under root 9, that is 3. So the value of under root D is 3. Now find the value of alphas and betas, because roots are exist here. If roots are exist, then we have to find the roots with the help of quadratic formula. So we apply here and here the formula for finding the roots, because it has two roots. One is alpha, the value of alpha is this, the value of beta is this. Now find the exact value. Value of a, value of b is 7 and negative sign is given in the formula. The value of under root d is 3 upon the value of a is root 2, that is 2 root 2.
So after subtracting here we have negative 4, 2 root 2, this 2 cuts this 1, so alpha will be negative 2 root 2. Now rationalize root 2, so root 2 2 cuts this 2, so alpha will be negative root 2. This is the alpha. Now find the beta in the same manner. So that will be negative 7 negative 3 upon 2 root 2. Negative 7 negative 3 is negative 10, 2 root 2, this 2 cuts this, so we have 5, negative 5 upon root 2. This will be the answer. Or now we can rationalize root 2, so we have negative 5 upon 2 root 2. This should be beta. In some book this is the beta is given, and in some book this is the beta is given. I tell you both way. Now comes to the question number 9. Question 9 we have solved. Now come to the question number 10. The question number 10 is here, root 3 plus 10x, root 3 x square plus 10x negative 8 root 3. 8 root 3 is equal to 0. This is the quadratic equation given in question number 8 from R.S. Agarwal book. First we have to compare this quadratic equation with the standard quadratic form of quadratic equation. Then we have to find the value of discriminant, that is d. Then on the basis of the value of d, we just going to decide we can find the roots or not. If d is positive, then we can find the roots of quadratic equation. So let's check. First we are going to compare this, then a will be root 3. Now we are going to comparing this, then b is equal to 10. Now comparing this, c is equal to negative 8 root 3. Now find the value of d, put the value of b, that is 10, 10 whole square, negative 4, value of a is root 3 and value of c is negative 8 root 3. This negative going to multiply this negative, and square of 10 is 100, positive root 3 going to multiply root 3, that is 3. 3 4 ja 12 and 12 8 ja 96. So we have 96. So d is equal to 196, that is positive. So we can say that roots are possible. Roots are possible. Now we find the value of under root d, that is under root 196. 196 is the square root of 14. So we have find the value of root d. Now find the value of alpha and beta by putting the values. So let's put the values of alpha. The value of b is negative 10, positive. The value of root d is 14. Value of a is root 3, 2 root 3. So we have here positive 4 root 3, that's cut for 2 times. So 2 root 3 alpha is this, and we can rationalize this, rationalize root 3, root 3, root 3, root 3. So 2 root 3 upon 3 will be the alpha. This is also correct and this is also correct. No problem. You can leave your answer here. No problem. So beta will be negative 10, negative 14 upon 2 root 3. So now we have negative 24, 2 root 3. That's cuts 12 times. So negative 12 by root 3. Here you can leave the answer, but it is not in the right manner. Here we have to be rationalize root 3 to find more accurate answer, that is negative 12 root 3 upon 3, that's cuts 12 4 times. So negative 4 root 3 is more appropriate answer of this beta. I think you understand. So these are the roots of this quadratic equation, negative 4 root 3 and 2 root 3 upon 3 or 2 root upon 3. These two values of alpha are same. Okay, now comes to the next question.
I have to be refill my marker. Let me check. Yeah, I have lots of marker. I have a bunch of markers. Now comes to question number 11. For that we have to rough this question portion. Yeah. Question number 11 is given. In question number 11 is given root 3x square negative 2 root 2x and negative 2 root 3 is equal to 0 is given. Now we are going to compare this quadratic equation with the standard form. Then a will be root 3, b will be negative 2 root 2 and c will be negative 2 root 3. आइए अब d में वैल्यू रखते हैं तो d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b इज 2 रूट 2 होल स्क्वायर नेगेटिव 4, वैल्यू ऑफ a इज रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव 2 रूट 3. Okay, this will square of 2 is 4 and square of root 2 is 2, so 4 2s are 8. Now root 3 and root 3 is 3 and 4 2s are 8 and positive 24. So d will be 32. Now d is positive here, then we can say that roots are exist or possible. Roots are exist. If roots are exist, then find the value of under root d. Under root 32, 32 will be 4 root 2. 4 root 2 because 2 to the power 5. 32 means 2 to the power 5 and 2 to the power 5 we take one pair of 2 and one pair of 2. We can make two pair of 2 and one is left, remain same here. Okay, now now find the value of alpha. For finding the value of alpha, we have to put the value of b under root d and a. Let's do it. The value of b is negative 2 root 2 positive 4 root 2 upon the value of a is 2 root 3. That is 2 root 2 plus 4 root 2 upon 2 root 3. These are the same thing, will going to be at 6 root 2 upon 2 root 3. This cuts 3 times. So we have 3 root 2 upon 3. This is the value of alpha. Not 3, that is root 3. Or now what you can do, you can rationalize because root 3 cuts 3. So we have and root 2 going to multiply root 3, then it become root 6. So alpha will be root 6 is given here. Now comes to the find the value of beta. For finding the value of beta, we have to the put value of b, d and a. Now put the value of b is negative 2 root 2. Value of under root d. The value of under root d is 4 root 2 and 2 root 3. Now negative is positive. So 2 root 2 negative 4 root 2 upon 2 root 3. Now we have negative 2 root 2 upon 2 root 3. This 2 cuts this one. We have negative 2 root 3 is the value of beta. And this is the solution of this given quadratic equation. The value of alpha is root 6 and the value of beta is negative root 2 upon root 3. Now move to the next problem, problem number 12. The problem number 12 is here.
and it is very easy. 2x square plus 6 root 3x -60 इज इक्वल टू 0। हम बोर नहीं होने देगा, पर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन रहने नहीं देगा। अगर आपने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में धूम मचाने वाले हैं। और मेरे द्वारा हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिस बच्चे ने आर.एस. अग्रवाल को अपने माइंड में गो थ्रू कर लिया, वो सीबीएसई के मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में 100% सफलता प्राप्त करने वाला है। उसका स्कोर 99 100% जाने वाला है मेरे बच्चा। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल से रिवीजन कर रहे हैं तो यह वीडियो बेसिकली आपके लिए है। और अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं अपने मैथ के एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। Now compare this. So a is equal to 2, b is equal to 6 root 3 and c will be -60। और मेरे बच्चे, अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ाई करी है, कुछ नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको देख डाल दिए। हारता वो है जो कोशिश नहीं करता। आखिरी टाइम है, हार नहीं मानना है, डटे रहना है, प्रयास करते रहना है, गो थ्रू होते चले जाना है चीज़ों से, और आप बेसिक 100% सफलता प्राप्त करने वाले हैं। गो थ्रू हो जाइएगा हर एक क्वेश्चन से बेटा, कुछ नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत आसान आने वाला है आपके लिए, इजी हो जाएगा बहुत। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखिएगा 6 रूट 3 होल स्क्वायर नेगेटिव, a की वैल्यू इज़ 2, c की वैल्यू इज़ -60। स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36 and 3, 36 3 is 108, negative negative is positive is 60, 180 plus is 480, that is 885. This is the value of d. Now here we have to find the factors of 588. How we find the factors of 88? Is it visible? Yes, is it visible? So 2 times 2, 9 times 4 times, फिर 2 times 1, 4 times 7 time, 7 time 2 1, 7 time 3 and 3 time 1. So this is the factor. Now we can say that roots are exist. If roots are exist, then find the value of under root d. Then we have pair of 2, we have pair of 7 and 3 is without pair. So we have 2 7 under root 3. So the value of d will be 14 root 3 here. This is the value of d, 14 root 3. Now find the value of alpha and beta. Find the value of alpha beta here. Put the value of b, that is -6 root 3 positive 14 root 3 upon 2 2 the value of a 2, 2 2 4. So alpha will be 8 root 3 upon 4, this cut 2 times, so alpha will be 2 root 3. This is the value of alpha. Now find the value of beta. -6 root 3 -14 root 3 upon 4. 14 and 6 is -20 root 3 upon 4. This cut 5 times, -5 root 3 is the value of beta. And this is the answer of this problem. Problem number 12. Now comes to the next problem. Problem number 13. Problem number 13 is given here. 4 root 3 x square
5x negative 2 root 3 is equal to 0. Yeah, let me check. Yeah, this is the problem. Now we are going to compare this quadratic equation with the journal form. So after comparing, a is equal to 4 root 3, b is equal to 5 and c is equal to negative 2 root 3. Now find the value of d. Well, 5 square of 5 negative 4 root 3 multiply negative 2 root 3. Square of 5 is 25, negative is plus, root 3 is 3, 4 4 ja 16, 16 2 ja 32 and 32 3 ja is 96. Now add them, we have 121. After adding we have 121, that is positive. So we can say that roots are exist. Now find the value of d here. Roots are exist here. Find the value of under root d, that is under root 121, that is 11. Now we are going to find the value of alpha and beta. For finding the value of alpha, we going to put the value of b, that is 5, value of root d is 11, that is 8 root 3, 4 2 ja 8 and root 3 ऐसे. That is we have positive 6 upon 8 root 3 and root 3. Root 3 is 3, 3 2 ja 6, 2 से 4 time. So alpha will be root 3 by 4. This is the answer for alpha. And now find the value of beta. So negative 5, negative 11, that is 8 root 3. I just put the value of 2a from here directly. So that is 16 upon 8 root 3. This cut 2 times. So we have negative 2 root 3. This is the value of beta. Okay. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आपके साथ डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. और जैसे कि मैंने बोला, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी सहायता कीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, और मैं एक एक क्वेश्चन को, मेरी कोशिश है कि मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं पेपर के, आपके CBSE पेपर से पहले आपको प्रोवाइड कराऊँ. तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा. बस आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते चले जाइएगा और देखिएगा आपका रिवीजन 100% होगा और आपका 100% स्कोर आप करने वाले हैं. तो लगे रहिएगा. वी स्टडी मैथ के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट देखिएगा, क्रैकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th को, और उसमें मैंने जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है एक एक क्वेश्चन का. पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद में आप एक्सरसाइज 4B का मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. एक्सरसाइज 4B का लेक्चर 1, लेक्चर 2 दिया हुआ है. ये लेक्चर 3 है जो मैं आज आपके लिए बनाया है. इसको ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर.